आपने अपने करियर में तरह तरह के इन्वेस्टर्स देखे हैं। कहीं आपने हैंड होल्ड करके अब वो एचएनआईज होंगे, वेल्दी होंगे, और ईएमएस एआईएफ वर्ल्ड में तो ऑब्वियसली जो भी आ रहे हैं वो ऑलरेडी वेल्दी हैं। तो वेल्दी लोगों की ऐसी क्या एक दो हैबिट्स जो आपने देखी अपने करियर में जिससे कि वो वेल्दी बन जाते हैं? देखिए, सैलरी आजकल बढ़ गई हैं, यंग लोग हैं, अच्छी अच्छी सैलरीज पे आ रहे हैं कुछ सेक्टर्स में, सब में नहीं कह रहा मैं। रिस्क्स भी बढ़ गए हैं, जॉब ले ऑफ्स के एक सेक्टर, लेकिन अब ईसॉप्स की स्टोरी एक बार फिर शुरू हो गई है। लोग वेल्थ बना रहे हैं, कई लोग चार चार पांच पांच जगह काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसी हैबिट्स हैं आपके मुताबिक कमल जो वेल्दी लोगों को और वेल्दी बना देती हैं? जो ठीक से इन्वेस्ट करते हैं, जो ठीक से, तो वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या आपके मुताबिक, क्योंकि आप इनसे रूबरू रहते हैं, क्या आपके मुताबिक इनकी सोच होती है? सो जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी पहली बात तो क्लैरिटी होती है कि सब कुछ वो खुद नहीं कर सकते. They know that for getting better outcome they need expert in the life, and they don't waste their time in trying to delve in stocks themselves or trying to invest in some of these structures directly. They identify a good wealth manager, they identify a good advisor, and they are confident because they are kind of wealthy, they are confident, and hence वो necessarily बड़े brands की तरफ नहीं जाते. वो उन लोगों की तरफ जाते हैं जो रियली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और उन फंड्स की तरफ जाते हैं चाहे वो बुटीक हो बट वो ऑब्जेक्टिवली अल्फा क्रिएट कर रहे हैं. सो दे आर वन obviously aware that yes, I need experts to help me. Secondly, in their search they are confident and they will not necessarily invest with brands. They will go with people and funds based on their own objectivity, and they, because they know how to take decisions, they have kind of dealt with situations, and that is how they have become wealthy, and they have had those learnings. And obviously they do not only and only focus on kind of things like I want to worry about markets too much, I want to do reviews and kind of get best returns always, because उनको पता है कि markets are non-linear, equity requires patience, and one should not disturb one's own health beyond a point, one's own sleep beyond a point, and give it to I would say expert for long term, and they remain with that expert and advisor in long term, and that is how ultimately they are able to take care of their own time well, and are able to get best outcome, and obviously are not able to disturb their sleep, and also are able to kind of continue to making wealth.